जय श्री जगन्नाथ वेलकम टू स्पिरिचुअल केमिस्ट्री समस्त को आज सेशन को स्वागत मु पूर्ण सर समस्त को स्वागत करछि आज सेशन को आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल वेरी गुड मॉर्निंग कृष्णा कृष्णा टिके सेंड कर दियो ए लिंक टाको तुम सांग मान सहित प्लीज सेंड दिस लिंक अमंग योर फ्रेंड्स आ मते को किछि प्रॉब्लम होछि कि रिगार्डिंग माय वॉइस वॉइस को नहीं कि किछि प्रॉब्लम होछि डू यू फाइंड एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माय वॉइस नो सर ओके अमित वॉइस ठीक ठाक अच्छी अमित वॉइस ठीक ठाक अच्छी एम आई ऑडिबल प्रॉपरली वॉइस ठीक ठाक अच्छी वॉइस ठीक ठाक अच्छी ठीक है ये लिंक टा तुम सांग मान सहित शेयर कर दियो अमंग योर व्हाट्सएप ग्रुप रे लिंक टा टिके शेयर कर दियो सांग मान सहित सो दैट अन्य माने भी जॉइन कर परिबे हम्म आयशा साहू अच्छा आयशा साहू जल्दी जल्दी समझते ज्वाइन कर दियो शीघ्र 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 समस्त ज्वाइन कर दियो प्लीज ज्वाइन वेरी क्विकली समस्त शीघ्र शीघ्र ज्वाइन कर दियो लेट्स ज्वाइन दिस सेशन नमस्कार सर आरोसी को उठिबाकू जाइथिली कृष्णा अच्छा तो आरोसी और कृष्णा दी जण मिस जाइछन्ती दी जण फ्रेंड हे जाइछन्ती मॉर्निंग उठुछन्ती अच्छा सरिता वेरी गुड मॉर्निंग तो बहुत बढ़िया एग्जांपल एक्चुअली तुम देखिबो आरुषि और कृष्णा तो हमर कृष्णा गाल पूजा माने कृष्णा जी सी आरुषि को कॉल करती आरुषि मध्य कॉल करती कृष्णा को जदि लेट हो जाए क्लास स्टार्ट करिवारे बा क्लास रे जॉइन करिवारे तो एई भलिया रुहे फ्रेंडशिप आउ एई भलिया रुहे समानकर पढ़िबार जो जोश जद्वारा तुम जब देखिबो जणे जणको हेल्प करछन्ती सो दैट कोन हबो ना सेमानकर पढ़ा आहुरी इजी हो जाय परियो याको हमें कहू माइक्रो ग्रुप स्टडी बहुत इंपोर्टेंट पिला माने हाँ सरिता याको आप रे भी पढ़ेबी बट रिमेम्बर ए चैप्टर को आप रे पढ़ेला बेले ठीक कौन हबो ना ठीक स्लो हबो माने स्लो तो नहीं स्पीड रे पढ़ेबी ए जिंसटा को आप रे स्पीड रे पढ़ेबी जद्वारा प्रॉब्लम क्रिएट हबो कौन हम गोटे गोटे जगह स्किप भी कर दे पारे गोटे गोटे जगह स्किप भी कर दे पारे ठीक अछि तो ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ ନର୍ମାଲ ପଢିବା ଯେମିତି ଏଠି ପଢୁଥିଲେ ତ ବିଫୋର ଗୋଇଂ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଲେଟ୍ସ ଡିସ୍କସ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ହ୍ୟାଭ ଷ୍ଟଡି ଟିଲ୍ ଟୁଡେ ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ରିଆକ୍ସନ ରହିଛି
फास्ट रिएक्शन आउ स्लो रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन रही फास्ट रिएक्शन आउ स्लो रिएक्शन ଆମେ ଦେଖିବା reactant ର concentration ଏଭଳିଆ gradually exponentially decay ହଉଛି whereas product ର concentration gradually increase ହଉଛି and rate of the reaction and କଣ ତୁମର ନା rate of the reaction ହଉଛି rate of the reaction is equal to 1 upon m rate of disappearance of A 1 upon n rate of disappearance of B 1 upon P rate of formation of C okay ତାପରେ କଣ ନା next ଆସୁଛି କଣ next ଆସୁଛି ଗୋଟେ question ସେଇ question କୁ base question is based upon the rate law earlier we have discussed. तापर हम देखिले factors affecting rate of reaction concentration बढ़ले बढ़िबो temperature बढ़ले बढ़िबो temperature coefficient अछि temperature coefficient कोन kT plus 10 divided by kT होछि temperature coefficient surface area बढ़ले reaction rate कमिबो catalyst reaction को बढ़ेबो radiation specific reaction radiation बढ़ले बढ़िबो nature of reactant कथा जदि हम देखिबा सेटा ionic हेतिबो reaction को fast रहइबो rather than covalent आउ कोन कहितली ना आउ कहितली मो जे जदि तुमरो मेटल रो हाइड्रोलिसिस होची मेटल रो हाइड्रोलिसिस होची तार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर डिपेंड करे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन ना जो मेटल रो लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फास्टर तापर हम जब देखिबा नॉन मेटालिक ऑक्साइड रो जदी नॉन मेटालिक ऑक्साइड रो कोन होची ना ऑक्सीडेशन होची नॉन मेटालिक ऑक्साइड रो इट डिपेंड्स अपॉन इट्स बॉन्ड ऑर्डर लोअर द बॉन्ड ऑर्डर हायर विल बी द रिएक्टिविटी हायर विल बी द रिएक्टिविटी हैला तापर हम देखतिले नेक्स्ट order होची तुम्हारे कौन order होची the total the summation of all the powers in the rate equation and it is calculated experimentally does not exceed 3 in general तापर it can be zero or fractional never becomes negative ताको बेस करके हम किछि क्वेश्चन करथिले एइटा भी गोटे प्रकार क्वेश्चन थिला जोठी कोन रहउतला ना हमें रेट एठे फाइंड आउट करथिले फाइनल रेट हला याको बेस करी क्वेश्चन करथिले देन आमे पढिथिले मॉलिक्युलरिटी होची केतेटा नंबर ऑफ molecules number of reacting molecules which take part in the rate determining step is known as molecularity ताको नै कि आमे देखथिले molecularity केमदी कोन कैलकुलेट करबा आ pseudo fast order कोन pseudo fast order ना तुम्हारा acid hydrolysis is your pseudo fast order it is rate ता तुम्हारा कोन रहे ना rate is directly proportional to the concentration of ethyl acetate although it similar to be although it is a bimolecular reaction तापर हम देखथिले जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट रे k नॉट आस्तिला हमर x by t आउ तुमरा हाफ लाइफ आस्तिला a by 2 k नॉट एंड तुमे स्लोप जदि देखिबो x upon t ताले स्लोप आसीबो k नॉट t हाफ upon a स्लोप आसीबो 1 upon 2 k नॉट a upon t देखिबो स्लोप आसीबो माइनस k नॉट हला याको बेस करी प्रॉब्लम करथिले याको भी बेस करी प्रॉब्लम करथिले हमें तापर एठे ए भलिया क्वेश्चन करिथिले भी ठीक अछि तापर सॉरी फास्ट ऑर्डर जाइथिले फास्ट ऑर्डर रे k1 is equal to 2.303 by t log a by a minus x आ यूनिट ऑफ k1 होची 1 upon second बा सेकंड इनवर्स हला तापरे t हाफ रो एक्सप्रेशन आतिला 0.693 by k1 आ एठे किछि प्लॉट इंपोर्टेंट प्लॉट जो जेम देखिबा log a by a minus x versus t आसीओ एभला स्लोप k1 by 2.303 log a versus t आसीओ स्लोप minus k1 upon 2.303 t हाफ upon a गोटे स्ट्रेट लाइन आसीओ t हाफ upon k1 ए भलिया गोटे पैराबोला आसीओ ठीक अछि तापर हमें एभला क्वेश्चन करथिले से क्वेश्चन रे कोन थिला ना क्वेश्चन रे नॉर्मल गोटे फास्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन रो एक्सप्रेशन थिला आउ तापर हमें एठी आ गोटे क्वेश्चन भी करथिले एठी एटा लास्ट टाइम मु आई थिंक प्रूफ करैथिली जोडाटे मिसिंग अछि राइट एटा लास्ट टाइम पढाइथिला राइट एटा लास्ट टाइम पढाइथिला ठीक अछि किछि पिला माने किछि प्रॉब्लम होछि कि जदि प्रॉब्लम होछि कहियो तुम माने को कोऑपरेशन जो आज हमें ए जे आसीचे यार बोथे आंसर मोर अलगा रहितला गोटे मिनिट लिस्ट मते देखिया को दियो दिस इज काइनेटिक्स लेट मी ओपन दिस ओके टिके वेट करियो दियो मते लागुची एथरे अछि डाटाटा कोड फाइल दा अछि मते सेडा देखियो पड़ियो गोटे डिलीट मार दा पड़ियो एक्स्ट्रा अननेसेसरी उरा let me check which file is actually updated कारण हम लास्ट टाइम करिथिले जो सेटा अपडेटेड थिला राइट
Yes, this one is the updated version. Yes, this one is the updated version, right? हाँ एटा updated आस्तिला तो आमे एठे proof करथिले एठे proof करथिले कोन ना genetics notes 3 ताले notes sorry मते delete माने हाँ it is the updated version, right? एटा updated version. प्रणाम 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 ये प्रियंका बहुत प्रणाम तुमको अशेष अशेष प्रणाम क्लास को आसिबार बहुत बहुत धन्यवाद एस ए क्वेश्चन रे सॉल्व होइछि माने ए पीपीटी रे सॉल्व होइछि एक्चुअली से पीपीटी टा मिसिंग थिला कारण हमर करंट पळि दिथिला लास्ट 2 डेज हला हमें क्लास करि पार नथुलु लास्ट 2 डेज हला हमें क्लास करि पारे अक्षम थिलु सेत में क्लास हेइ पार नथिला ओके तो तुमे जदि लक्ष्य करिवो लास्ट क्वेश्चन को पळबी लास्ट स्लाइड पळुछि आमे एटे सॉल्व करथिले जे कोन सॉल्व हेतला बहुत इंपोर्टेंट कोन सॉल्व हेतला ना T 75% is equal to 2 multiplied by T half and T 99.9% is equal to 10 multiplied by T half. So T 75% केते आसीबो ना यार द्विगुणा 69.3 रो द्विगुणा T 99% केते आसीबो यार 10 गुणा यार 10 गुणा बस एटा होची फाइनल आंसर एटा होची फाइनल आंसर सो एडी ए क्वेश्चन रे आउट टिके डाटा मिस माने करिवा को भूल जाइथिली सो एटा आंसर जो देखिबा तुमको एटा सबले मन रखियो पड़िबो कोन 75% टा टी हाफ रो ट्वाइस हबो बट इज 99% टा टी हाफ रो 10 10 गुना हबो सो 2 मल्टीप्लाइड बाय एटा थिला हमर केते ना एटा हमर थिला टी हाफ केते थिला टी हाफ थिला 69.3 कारण एग्जाम रे एगुडा को बहुत इंपोर्टेंट एगुडा कर बहुत इंपोर्टेंट आउ किंतु हम सीएचएससी पे एटा बहुत इंपोर्टेंट सीएचएससी पार्ट पे एटा बहुत इंपोर्टेंट whereas t 99.9% is केते थिला this is equal to 10 multiplied by 69.3 so এটা কেতে হবে না 693 minutes right এটা 693 minutes হবে whereas এটা কেতে হবে 2 3 6 2 9 18 18 3 1 নিয়া 212 কেতে 138.6 minutes 138.6 minutes right fine last time ଆମେ ଏତିକି ଯାଏ ପଢିଥିଲୁ लिपुन कहले आज क्लास टा ଟିକେ long time କରନ୍ତୁ ओके କରିବା 37 very good कृष्णा very good very good ଯିବା ଏଇ क्वेश्चन ମୁଁ କରିଥିଲି क्वेश्चन तुमको होमवर्क पचारଥିଲି t 90% is equal to t half multiplied by this t half multiplied by this এটা କେତେ value what is the value actually you have to find out at your own यार value କେତେ हबो यार value केते what is the value of this question तापर हमें आज nth order expression calculate करबा यार value केते हबो nth order calculate करिया पूर्व आ गोटे पार्ट मु मिस कर देछि माने छाडी देछि सेटा को आज भी कवर करबा सेटा को भी आज कवर करबा that is your related to that is related to volume ठीक है ताको रिलेट करछि गोटे वॉल्यूम को रिलेट करी गोटे क्वेश्चन रही सेटा को हमें नेकी करि परिबा सेटा को नेकी करबा आगो जोटा कि हमें कहि परिबा जे स्यूडो फास्ट ऑर्डर केमदी कोन रही छि एक्सप्रेशन स्यूडो फास्ट ऑर्डर सेटा स्यूडो फास्ट ऑर्डर पर भी करि परिबा स्यूडो फास्ट ऑर्डर पर भी करि परिबा यदि nth ऑर्डर कर दोछि तापर स्यूडो फास्ट ऑर्डर करि परिबा बट स्टिल लेट्स फोकस ऑन दिस ठीक अछि तो हमरा ऑलरेडी हमरा मु काउ किछि क्वेश्चन देखछु हां गोटे प्रेशर फॉर्मेट रे थिले रे पिला माने प्रेशर फॉर्मेट रे थिला फास्ट ऑर्डर गोटे क्वेश्चन ताको आगो प्रेशर फॉर्मेट नै जिबा ठीक अछि लेट्स गो फॉर प्रेशर फॉर्मेट नै जिबा बेसिकली यूजफुल फॉर एंट्रेंस हला गोटे प्रेशर फॉर्मेट थिला
टी 90% कृष्णा गाल कहले सर टी 90% आसी हमर टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.3010 ओके टी हाफ 0.3010 आसी आर यू श्योर टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.3010 आसी कारण एडे भी डिवाइडेड बाय 0.3010 आसीला हां तो गोटे मिनिट लेट मी चेक एडा सेति आसी कि नहीं गोटे मिनिट पिला माने मते टिके चेक करियो दियो एडा हे जिवो a बाय बळाकार हेबो 90% माने 10% ऑफ a बाय a multiplied by 10 by a by 10 so एडा 10 हे जिवो 10 हिजबो राइट log 10 हिजबो 1 हां ठीक यू आर राइट कृष्णा सो इट हिजबो t हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 upon 0.3010 राइट एट आसबो 1 upon 0.3010 1 upon 0.3010 एति आसबो आंसर यू आर राइट 1 upon 0.3010 राइट राइट कृष्णा वेरी गुड तो आमे बे जिबा गोटे आगु गोटे क्वेश्चन करबा रिलेटेड टू तुम्हारो प्रेशर पार्ट आज टिके क्लास को लॉन्ग करबा 6:15 जाय पढिबा काहे ना हमर 2 दिन हला क्लास भी हेनी भल रे तो टिके लॉन्ग टाइम पढिबा भल से पढिबा एक हम प्रेशर पढिबा प्रेशर पार्ट पढिबा प्लस वॉल्यूम पार्ट को भी देखिबा वॉल्यूम टा स्यूडो फास्ट ऑर्डर को नेकी करबा वॉल्यूम तापर हम जिबा नेक्स्ट हमर पार्ट को ओके ओके ठीक अछि सो हमर गोटे क्वेश्चन रहिछि सो हमें गोटे क्वेश्चन करबा क्वेश्चन को बेस करी करबा लेट्स डू ऑन द बेसिस ऑफ ए क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन रहिछि द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड क्वेश्चन रहिछि ए भले द फॉलोइंग डाटा the following data were obtained the following data were obtained actually कौन होछि ना किछि दिन हला मते भी मोर प्रेशर होछि रिगार्डिंग पीएचडी वर्क को नेकी प्रेजेंटेशन दबा ये दबा ए सब हला को मु झोल भाग पड़छि the following data were obtained during the first order thermal decomposition during the first order thermal decomposition thermal decomposition of during the first order thermal decomposition of N25 at constant volume at constant volume and here is the reaction that is your 2N25 gas gives rise to 2N24 gas plus O2 gas okay these are gas actually gas एटा होची तुम्हारो रिएक्शन तापरे कोन रहिछि ना सीरियल नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर टाइम टोटल प्रेशर एठे आगा हमें सबले देखुले कंसंट्रेशन टर्म एबे किंतु प्रेशर टर्म आसी गेला इन टर्म्स ऑफ एटीएम टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एटीएम इन एटीएम फॉर्मेट रे आसी गेला टोटल प्रेशर ओके प्रथमे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 रे हमर 0 थिला आ टोटल प्रेशर तुम्हारा 0.518 थिला सेकंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2 रे तुम्हारा एटा हे गेला टाइम हेला 100 आउडे टोटल प्रेशर हे गेला तुम्हारा 0.512 हला आउडे क्वेश्चन को आछि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हला कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एटा गोटे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एटा एंट्रेंस पे इंपोर्टेंट दिस इज ओनली फॉर एंट्रेंस नॉट फॉर सीएचएसई तो अब किछिटा क्लास अब तुम्हारा एंट्रेंस को बेसी ओरिएंट कर परिबा फॉर एंट्रेंस नॉट फॉर सीएचएसई तो हमर किछिटा क्लास खास करी दुई तीनटा क्लास अब एंट्रेंस ओरिएंटेड हे जिवो
माने किसी कॉन्सेप्ट रही जो गुड़ाक एंट्रांस रे आसे सेही कॉन्सेप्ट गुड़ाक आम एबे यूज करिया को जाउछे आमे वर्तमान कॉन्सेप्ट यूज माने सीएचएसई रा पढुचे ता सहित एंट्रांस तो मु जोड़े जोड़े इंटीग्रेटेड पार्ट रहिबो सेठी से सेक्शन मु एक्सप्लेन कर देबी ओके हम तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एई क्वेश्चन को हम केमदी करबा आज दिन तो हमको कोन डाटा रही छै आज दिन हम सबले कंसंट्रेशन रे करथिले एबे केमदी करबा प्रेशर रे केमदी करबा हमें प्रेशर रे हाउ कैन वी डू इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ठीक अछि हमें एबे प्रेशर रे केमदी करबा सो तुमर जदी देखिबो तुमर जदी देखिबो गोटे जनरल हमें जदी देखिबा याको जनरल वे रे हमें लिखिबा सो आको सॉल्व करिया गेले लेखा सरला सो हमें सॉल्व करिया गेले आगो हमें N2O5 gas gives rise to N2O4 gas plus O2 but remember एडी तुम्हें सबुबले यार एक्सप्रेशन बा तुमरो रिएक्शन को कोफिशिएंट जति तार तुमरो स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट अछि ताको मल्टीप्लाई करियो पड़ियो काहे की मल्टीप्लाई करियो पड़ियो तो जदि 2 मल्टीप्लाई न करछो ताले रिएक्शन कंप्लीटली तुमरो एठे आंसर भूलभाल हे जिवो तेनु तुमको रिएक्शन को बैलेंस करबा बहुत जरूरी से ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो फिजिकल हो जे कोन ऑर्गेनिक बा इनऑर्गेनिक जे कोन रिएक्शन हो ताको तुमको बैलेंस करिया को बाध्य हमें प्राय ऑर्गेनिक रिएक्शन रे बाय प्रोडक्ट लिखिबा को भूली जाऊ बैलेंस करिया भूली जाओ कि सब जिनस डिटेल्स रे लिखिया को पड़िबो कारण एक्सपेरिमेंटली तमे जहा पाउछो से जिनसडा को डिटेल्स रे लिखिबो आ एटा तुमे थियोरेटिकल पाइबो दिस इज थियोरेटिकली किंतु एक्सपेरिमेंट रे ए जिनसडा पाइबो हैला तो हमें प्रथमे देखिबा t इज इक्वल टू जेतले 0 थिबो t इज इक्वल टू सपोज 0 थिला t इज इक्वल टू हमर कोन थिला 0 थिला t इज इक्वल टू 0 थिला बेले t इज इक्वल टू 0 थिला बेले यार गोटे निर्दिष्ट एटीएम थिला N25 रो टोटल प्रेशर केरे थिला टोटल प्रेशर ऑफ N25 माने एमानकर एमाने जेतु फॉर्म ही नथले ताले केवल यार ही प्रेशर थिला यार ही प्रेशर टोटल प्रेशर ध्यान देगी सुन जेतोले किछि फॉर्म ही नथिला रिएक्शन स्टार्ट ही नथला ताले टोटल प्रेशर कहले यार टोटल प्रेशर को बुझाए माने N25 रो बा हमें एठे कहि परिबा दिस इज योर N25 सो हमें एठे लिखि परिबा दिस इज PI लेट मी राइट इट एज PI एटीएम ମୁଁ ପ୍ରଥମେ PI को तापर 0.5 बोली पुट करू सो PI लिखि दउछ हैला PI let me write it as PI okay PI माने इनिशियल प्रेशर ऑफ दिस रिएक्टेंट तापरे एमानकर 0 एटीएम थिला कारण एमाने रिएक्शन करी ही नथिले राइट बुझा पड़छ किंतु t इज इक्वल टू t सेकंड आमे एक जनरल मु गोटे जाउची जनरल रु आकु केमति तमे एई वे रे आन परिबो ठीक अछि गोटे जनरल रिएक्शन करूची माने जनरल नै यार जनरल फॉर्मलिज्म बाहर करची तापरे एठु हमें एडी के जिबा ठीक अछि t सेकंड बेलको सपोज N25 रो कंसंट्रेशन सॉरी N25 रो प्रेशर N25 रो प्रेशर सपोज कमी गला केते x मोल गोटे N25 पई x सरला ताले दुटा N25 पई 2x सरिबो आ थरे कहि रखची गोटे N25 मॉलिक्यूल पई बा 1 मोल N25 पई x मोल सरला ताले 2 मोल ऑफ N25 पई केते 2x सरिबो सो हमर सरिला केते 2x सरिला बळिला केते pi - 2x एटीएम आउ थरे कहि रखची यार इनिशियल प्रेशर PI थिला तो इनि जिंदी कंसंट्रेशन रे करथिला सेही मेरे एडे करबो केवल एडे एटीएम रहबो तो यार प्रेशर समहाउ केते कमी गला रिएक्शन रे ना x कमी गला सो दुईटा N25 माने 2x सो pi - 2x एटा कोन ही जिवो pi - 2x ही जिवो ताले एडी कोन ही जिवो एटा जेतु एटा x एटा ध्यान देगी देखो एटा जदी x हबो एटा जदी x 2x हबो 2x कोन हिची सरी जायछि एडे सेमदी 2x फॉर्म होबो सो इट विल बी 2x एटीएम बुझिया को चेष्टा कराओ थरे एटा केते हबो हमर 2x एटीएम फाइन बुझा पड़छि ना 2x एटीएम एटा केते हबो एटा x एटीएम हबो एटा 2x हबो आउ थरे कहि रखछि केमिदि x हैला ना तुमरो N25 रो कंसंट्रेशन को x नेली सॉरी N25 रो प्रेशर को x नेली N25 रो प्रेशर को x नेली माने N25 रिएक्ट करला परे तार x x प्रेशर बा x पार्ट कमी गला ताले 2x पार्ट कमी गला ओवरऑल प्रेशर तुम्हारो pi - 2x गेला जदि एटा 2x होची ताले करेस्पोंडिंग एटा भी 2x हबो एटा x हबो कारण एटा 2 गुण थिले एटा 2 गुण एटा गोटे गुण हबो तो x जेतु सरीची एडे सॉरी 2x जेतु सरीची फाइनल एतिकी आछि
2x যেহেতু সরিছি মানে এটা 2x ফর্ম হবো, এটা x ফর্ম হবো। বুঝা পড়ছি? ইট ইজ ইন টার্মস অফ কনসেন্ট্রেশন ବି তুমি রিলেট କରିପାରିବ। ফাইনালি বুঝা পড়লা এই যে না কোটে ডাউট রয়েছে এଠି? যদি এটা 3 থান্তা তাহলে এটা 3x ହେଇଥାନ୍ତା, যদি এটা 4 থান্তা তাহলে এটা 4x ହେଇଥାନ୍ତା, যদি এটা 5 থান্তা তাহলে এটা 5x ହେଇଥାନ୍ତା accordingly। ঠিক আছে, এটা accordingly। Similarly যদি এটা 2 ବଦଳରେ କିଛି ନଥାନ୍ତା କେବଳ x ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି এটা 3 3 থান্তা ତାହେଲେ এটা 3x ହେଇଥାନ୍ତା, and accordingly এটা ହବ। कृष्णा पचारे सर O2 रे x केमथि ହେଲା आउ थे कृष्णा हमें आगो ଟିକେ रिलेट करबा। आगो मु कंसंट्रेशन को रिलेट करछि तापर प्रेशर को से भलिया वे रे रिलेट करबो। देन देखि देखो N2O5 N2O4 O2 एटा 2 थिला, एटा 2 थिला, एटा किंतु 1 थिला। रेशियो देखो एटा 2 थिला बेले एटा 2 थिला, एटा 1 थिला, किंतु एटा सरीबो एटा फॉर्म होबो, एटा सरीबो एटा फॉर्म होबो। सरीला माने एटा केते सरला, सपोज एटा सरीला तुमरो 2x भाग सरीला बा 2x पार्ट सरीला, 2x पार्ट सरीला माने जहा थिला इनिशियल माइनस समथिंग 2x सरला, ताले एटा कोन हबो ना एटा जति की सरीबो एटा 2 फॉर्मेट रे अछि, एटा भी 2 फॉर्मेट रे हबो, 2x फॉर्म हबो, किंतु यार अधा हबो एटा, कारण एटा 2 अछि एटा 1 हबो, कारण यार अधा माने x हबो। बुझा पड़ला ना? और एग्जांपल नेबी मॉलिक्युलरिटी को नहीं गोटे क्वेश्चन करेबी कहउचंती प्रियंका ना दरकार नहीं मॉलिक्युलरिटी को नहीं क्वेश्चन आ करबा। होमवर्क कर दे देबी गोटे क्वेश्चन हला, होमवर्क नहीं दे देबी तुमे सेटा को नहीं कर परियो मॉलिक्युलरिटी को नहीं। बुझा पड़ला एजा क्लियर? क्वेश्चन दे देबी सॉरी। बुझा पड़लानी? ओके कृष्णगल पूजा कहले बुझा पड़लानी। लेट मी टेक एन एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ही भाबो, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन भाबो। सपोज एटा थिला तुम्हारा इनिशियली 10 मोल लीटर इनवर्स, ध्यान देख सुनो 10 मोल लीटर इनवर्स, एटा 0 थिला, एटा 0 थिला, एटा भी 0 थिला। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भाबनी, कंसंट्रेशन। तो एठू कोन हला, एठू जदि हम देखिबा एठू सरीला तुमरो 10 रु केते सरीला ना 10 रु सरला 4 मोल, केते मोल सरला 4 मोल, सो 2 इंटू 2 मोल सरला। ध्यान देख सुनो 4 माने 2 इंटू 2 मोल सरला, एति की सरीला। ताले एठे जति की सरी थिबो, एठे जति की सरी थिबो तार 2 गुणा हबो सेति की, माने एठे 2 मोल सरीची 2 इंटू 2 4 मोल, एठे 2 इंटू 2 4 मोल हबो। अच्छा एठे 2 इंटू 2 हिची, किंतु यार अधा हबो, कारण एठे 2 थिला बेले एठे 1 बा एठे 2 जदि फॉर्म होची 2 मोल जदि फॉर्म होची एठे 1 मोल फॉर्म हबो, सो एठे 2 इंटू 2 मोल फॉर्म हैला, एटा और बेटर हबो 2 केवल रखुची 2 मोल फॉर्म हैला। तो 10 2 मोल सरीला ताले पटे 2 मोल फॉर्म हो, कारण एटार स्टोइसियोमेट्रिक सेम, तेणु एटा को नहीं कि प्रॉब्लम नहीं। किंतु एटे 2 सरला बेले यार अधा 2 रो अधा हबो केते एटे 1 मोल लीटर इनवर्स। अच्छा आउ किछ समय परे कोन हबो ना आउ किछ समय परे ये कोन हे जिवो 2 रु एटा 4 हे जिवो, 4 हे गेले ये केते हबो ना ये हे जिवो 4 मोल, ये हे जिवो केते 4 रो अधा 2 मोल। आउ किछ समय परे 10 रु 6 पळेबो, ये कौन है 6 मोल फॉर्म होबो, ये 6 रो अधा 3 मोल लीटर इनवर्स। तो तमारो जहां एठी कंसंट्रेशन फॉर्म होची N2O4 रो तार अधा ही जाउची। बुझा पड़ुची कृष्णा? बुझा पड़ुची? बुझा पड़ुची? ओके तो एई भलिया वे रे हमरो फॉर्म हिसला, एई भलिया वे रे तुमरो फॉर्म हला। ओके फाइन क्लियर। लाइफ क्लास रे इना मजा लागे कोन ना बेले बेले गोटे गोटे कांसेप्ट हमें कोन करू ना एटा बुझी जाइछि पिला को बोली कि भाबी दो, किंतु सब पिला बुझी न पारंती ना, तेनु लाइफ क्लास रो बहुत इंपोर्टेंस एया जे बेले बेले जो कांसेप्ट हमें बुझी न थाउ सेटा बहुत इंपोर्टेंट हे जे हला। तो ये ही गला हमर प्रेशर, किंतु मने रखो ध्यान देकी सुनो एटा तमर जहा कोएफिशिएंट थिबो से अनुसार ए प्रेशर बदलिबो, एटा ए रिएक्शन पई जनरल हला, किंतु प्रत्येक रिएक्शन पई ये जनरल अलग अलग वे रे लिखा हो, तेणु प्रत्येक रिएक्शन पई तमे ए भलिया वे रे भाबिबा को पड़िबो। जदि एटे 2 बदलरे 3 थांदा ताले एटा -3x ही थांदा, जदि एटे 2 बदलरे 4 थांदा ताले एटा 4x ही थांदा, जदि एटे 1 बदलरे 3 थांदा ताले 3x ही थांदा। तो जहा थिबो सेतिकी इंटू 3 हबो हला। क्लियर? ओके बैसारी।
तो एबे हमें जीवा जे इनिशियल प्रेशर जदि हम देखिबा पीटी टोटल प्रेशर एट टाइम टी टोटल प्रेशर एट टाइम 0 टोटल प्रेशर एट टाइम 0 एट टी इज इक्वल टू 0 केते होची ना टोटल प्रेशर होची तुम्हारा पीआई प्लस 0 प्लस 0 दिस इज इक्वल टू योर पीआई एटीएम टोटल प्रेशर है गला पीआई एटीएम व्हेन एट टी इज इक्वल टू 0 बट टोटल प्रेशर एट टी इज इक्वल टू टी सेकंड तुम्हें एग्जाम रे एते तो लिखिबनी कारण एंट्रांस रे सब डिटेल्स लिखिया पड़ेनी एंट्रांस रे एडा लिखिबो डायरेक्ट एतिकी लिखिबो लिखिकी तापर फर्दर रिलेट करिवो एगुडा को तुमको केवल बुझा पे करछु एडा कोन हो ना पीआई माइनस 2x आमे किछि क्वेश्चन कला बेले ए कांसेप्ट को यूज करबा सेते बेले किंतु तुमको जेमति प्रॉब्लम ना हुए हैला सेते बेले जेमति प्रॉब्लम ना हुए से हमर एठे टोटल प्रेशर आसी गला केते टोटल प्रेशर आसी गला हमर पीआई प्लस x पीआई प्लस x एटीएम पीआई प्लस x एटीएम ठीक है तो टोटल प्रेशर आसी गला हमर पीआई प्लस x ओके क्लियर पीआई प्लस x आसी गला टोटल प्रेशर दिस इज इक्वल टू योर पीटी दिस इज इक्वल टू पीटी जोटा कि हमर गिवन अछि एटा पीआई एटा पीएफ लेट मी राइट इट एज पीएफ सो एटा तुमरो जदी क्वेश्चन को फॉलो करिवो एटा होची तुमरो क्वेश्चन रे पीआई दिस इज इनिशियल प्रेशर टोटल प्रेशर दिस इज फाइनल टोटल प्रेशर फाइनल हला टोटल प्रेशर सो एटा भी से भलिया कोन हला दिस इज अगेन पीएफ माने टोटल फाइनल प्रेशर पीआई माइनस 2x प्लस x क्लियर क्लियर बुझा पड़ला समस्त को ओके ताहले हमर अकॉर्डिंग टू फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बर्तमान हमें कौन करवा ना बर्तमान हमें पीआई माइनस 2x को पीएफ फॉर्मेट रे लिखबा काहे कि ना पीआई माइनस 2x होची तुम्हारा फाइनल प्रेशर ऑफ N25 रिएक्टेंट सो पीआई माइनस 2x को बा पीआई माइनस 2x को मु कौन करली पीआई माइनस 2x को ए भले फॉर्म रे लिखली पीआई माइनस 2x विल बी इक्वल टू पीएफ कौन हो पीएफ एटा 2x प्लस x अच्छी 2x प्लस x सेपट गले pf माइनस 3x pf माइनस 3x आथरे मु कहि रखछि गोटे मिनिट टिके रुह ना 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 एमदी लिखिबानी सॉरी एमदी लिखिबानी तापर मु x रो मूल्य बाहर करबी pi प्लस x इज इक्वल टू pf ताले x रो मूल्य बाहर करबी तो मते प्रत्येक स्टेप रे x रो मूल्य इन टर्म्स ऑफ pf और pi बाहर करियो पड़ियो तो प्रत्येक एग्जांपल रे मते कोन करियो पड़ियो x रो मूल्य pf और pi रे बाहर करियो पड़ियो सो pi प्लस x इज इक्वल टू pf ताले x इज इक्वल टू pf माइनस pi फाइन बुझा पड़ला कारण एटा pi प्लस x इज इक्वल टू pf सो x रो मूल्य इन टर्म्स ऑफ pf माइनस pi करिबा पड़ियो आई हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ pf माइनस pi बुझा पड़छि बुझा पड़छि ना ओके फाइन x रो मूल्य आसी गेला एबे मु कोन करबी एबे मु यूज करबी फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अकॉर्डिंग टू फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तमे एटू हाफ लाइफ भी बाहर कर परिबो हाफ लाइफ तो तमे जानि छ 0.693 बाय k1 सेटा दरकार नै अकॉर्डिंग टू फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स k1 रो एक्सप्रेशन कोन अछि ना 2.303 बाय t log a बाय a minus x एंड ए बदल रे किंतु हम पकेबा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए माने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एडी कोन हबो इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट दैट इज योर पीआई एंड फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट होची तुम्हारा पीआई माइनस 2 आउ थरे कहि रखछि एठे काहे कि मु एडा पुट करली ठीक अछि पीआई होची तुम्हारा इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट होची तुम्हारा कोन ना रिएक्टेंट होची रिएक्टेंट लेख N24 लेखनी रिएक्टेंट एंड pf pi minus 2x होची तुम्हारा फाइनल प्रेशर ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट फाइन
सो कौन है फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट होची पी माइनस 2s इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट होची पी ओनली क्लियर बुझा पड़ा सब बुझा पड़ा ना ताहले हमें ये कौन पुट करवा ये हमें एज यूजुअल जहाँ जिंदगी पुट करवा था पुट कर देबा बस सो k1 आसीबा हमरो 2.303 बाय t हला log a सॉरी pi बदल रे pi रो वैल्यू हमें pi को pi ही लिखिबा बट ये px x बदल रे हमें pf रो वैल्यू x रो बदल रे ए वैल्यूटा पुट करवा काहेकि हमको सबले pf और pi सबले गिवन थिबो क्वेश्चन रे हमको कौन गिवन थिबो फाइनल प्रेशर फाइनल टोटल प्रेशर इनिशियल टोटल प्रेशर ए दिरा गिवन थिबो सब बेले सब क्वेश्चन रे हमको कौन गिवन थिबो ना फाइनल टोटल प्रेशर इनिशियल टोटल प्रेशर तेनो हमर मेन काम हला x को एलिमिनेट करके हम फाइनल और इनिशियल फॉर्मेट रे लिखिबा तेणु मुझे पीएफ माइनस पीआई करदेली पीएफ माइनस पीआई एटा एक्चुअली एनसीईआरटी बही रे जदी तमे देखिबो टिके कॉम्प्लिकेटेड लागिवो ई पार्टटा मुझे एक्चुअली सेति भाई मुझे टिके चेंज करिछि एनसीईआरटी बही रे टिके कॉम्प्लिकेटेड रहिछि बट सेम जिंस ही रहिछि सेम जिंस ही रहिछि बट बुझिया पई मे बी टिके कॉम्प्लिकेटेड रहि पारे तो मु सेटा को जस्ट सिंपलीफाई कली मोडा एनसीईआरटी बही रु फॉलो करछि पीआई माइनस 2pf plus pi right plus pi plus pi right plus pi so it is coming as 2.303 by t log pi divided by log pi divided by pi plus pi this is 2pi minus 2px 2pf 2pi minus 2pf so it will be 2pi minus 2pf k1 ର expression ଏତିକି ଆସିବ ତ ଏଟା ଆମେ ଗୋଟେ general expression ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଏଟା ଆମେ ଗୋଟେ general expression ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରେସିପି କଣ ନା ରେସିପି ହଉଛି ପ୍ରଥମେ x ବାହାର କରିବା in terms of pf minus pi in terms of pf and pi x how relates pf and pi देन सेही x ର मूल्य एठे पुट करिवो ताले तमरो k1 ର एक्सप्रेशन पळे आसीबो तो प्रत्येक क्वेश्चन पई डिफरेंट डिफरेंट रहबो हमें आउटे क्वेश्चन नै कि क्वेश्चन को चेक करबा ए क्वेश्चन केमदी करा जिवो वेरिएशन केमदी आसीबो आउटे क्वेश्चन नै कि करबा सो ए क्वेश्चन अनुसार पीआई होची तुम्हारा केते ना पीआई होची तुम्हारा 0.5 whereas पीएफ होची 0.512 सो हमें एगुडा को पुट करबा हला पुट करबा टाइम केते देछि लेट्स go for time also time केते रहिछि टाइम रहिछि एट कांस्टेंट वॉल्यूम टाइम किछि देइनी हाँ टाइम देछि ना टाइम 100 सेकंड देछि राइट टाइम 100 सेकंड सो हमर जो देखिबा t देछि 100 सेकंड सो इन दिस क्वेश्चन t होछि तो तुमको प्रत्येक थरो ई भले गोटे जनरल k1 एक्सप्रेस करियो पड़ियो प्रत्येक क्वेश्चन पई प्रत्येक रिएक्शन पई k1 रो एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन आनिया को पड़ियो हला सर 2 पाई सर 2 पाई एंड pf बोथ रे मल्टीप्लाई हबा कथा ना 2 पाई एंड pf बोथ रे मल्टीप्लाई हबा कथा ना हां बोथ रे मल्टीप्लाई हला ना तो pi minus pf multiplied by 2 तो तुम्हें और सिंपलीफाई करले pi minus pf multiplied by 2 हला तो एटा से अनुसार कली मु एटा धीरे धीरे स्लोली कली किंतु हमको एग्जाम हॉल रे एते स्लो कले टाइम पळै थिउ सेते तुमको स्पीड करियो पड़े प्रैक्टिस एते स्पीड छिबो जे स्पीड रे करलो सो टी होची तुम्हारा 100 सेकंड राइट एटा हमर 100 सेकंड रे थिला 100 सेकंड हला आउ पीआई थिला तुम्हारा पीआई जे तुमे लक्ष्य करबो पीआई केते थिला ना पीआई थिला तुम्हारा क्वेश्चन रे ना 0.5 पीएफ थिला 0.512 0.5 0.512 0.512 एटीएम हला एटा तो नेगेटिव रे आछी ना ठीक अछि गोटे मिनिट हाँ 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 यस 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 तुम्हें ठीक कहलो कृष्णा ठीक कहलो मु एटा भूल कर दी छी
it have a plus 2pi, right? You are right. Plus 2pi. So it have a 3pi minus 2pf. Yes. ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆନ୍ସର ହେଇଭଳିଆ ମୁଁ କହିଲି ନେଗେଟିଭ ରେ ଆସିଗଲା କଣ ନେଗେଟିଭ ରେ ଆସିଗଲେ ତ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଭୁଲ ସୋ 3pi minus 2pf. Yes, yes, yes. Thank you Krishna. Thank you. ତା ଉପର step ରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି. Yes. ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଅଛି 3pi minus 2f ହବ ସୋ ଆମର k1 କେତେ ଆସିବ k1 basically 2.303 by t ହଉଛି 100 log pi ର value ହଉଛି 0.5 divided by 3 multiplied by 0.5 minus 2 multiplied by 0.512 ଯୋଉମାନେ ବି ଏ କ୍ଲାସ କରୁଛ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସବୁ ଗୁଡାକ ଚାପ୍ଟର କୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆପ ରେ ବି ପଢା ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆପ ର ପାର୍ଟ କୁ CHSE ପାର୍ଟ କୁ କଣ କରିଦେବି ନୋଟ ରୁ ପଢେଇଦେବି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ନୋଟ ରୁ ପଢେଇଦେବି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ସେଗୁଡାକ ଆଉ ଆଉ ବଳକା ଯୋଉଗୁଡାକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ ଆଡ ହବାର ଥିବ ମୁଁ ସେଗୁଡାକ କଣ କରିବି ଆଡ କରି କରି ଯିବି ଯେମିତି ଆମର ସିବିଏସଇ ରେ ସରି ସିବିଏସଇ କହୁଛି ଯେମିତି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଫୁଲି ୟୁଜଫୁଲ ହେଇପାରିବ ତ ମୋର ମେଇନ ମୋଟୋ ହେଲା ବିଫୋର ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କନସେପ୍ଟ କଭର କରିବି ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି ବଟ ଜାଣିନି କେତେ ଦୂର କଣ କରିପାରିବି କାରଣ ମୁଁ ବି ଏମିତିରେ ପ୍ରେସର ରୁହେ ସୋ ଯେତିକି ଚାପ୍ଟର ହବ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାର୍ଟ କୁ କଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସୋ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ୱିଥ CHSE ଆମେ ସବୁଗୁଡା ୱିଥିନ୍ ଡିସେମ୍ବର ପରେ ତ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କୁ ଟଚ୍ କରିବିନି ହେଲା ହୁଁ ସୋ याକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ କେତେ ଆସିବ ନା 2.303 divided by 100 into log 0.5 এই ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କାଲକୁଲେଟର ୟୁଜ ନ କଲେ ଟାଇମ ପଳେଇବ କାରଣ ଆମର ଏକ୍ସାମ ହଲ ରେ କାଲକୁଲେଟର ଏଲାଉ ଥିବ 2 ଦୁଗୁଣେ 4 2 1 2 2 5 10 1.024 ସୋ ମୁଁ କାଲକୁଲେଟର ୟୁଜ କରିଦଉଛି ମୁଁ କାଲକୁଲେଟର ୟୁଜ କରୁଛି ଲେଟ ମି ୟୁଜ ଦ କାଲକୁଲେଟର ହୁଁ into log 0.5 so ଆମେ କଣ କରିବା log bracket ରେ 0.5 okay bracket close divided by bracket close କରିଦିଅ divided by ଆଉ ଗୋଟେ bracket ଆରମ୍ଭ କର 1.5 1.5 minus 1.024 bracket close ହେଲା then second bracket close ବା ତୁମେ ନହେଲେ ୟାକୁ solve କଲେ କେତେ ଆସିବ solve କଲେ ଆସିବ 10 ରୁ 4 ଗଲେ 6 10 ରୁ 4 ଗଲେ 6 ପୁଣି 4 ରୁ 2 ଗଲେ 4 ରୁ 2 ଗଲେ 10 ରୁ 4 ଗଲେ 6 ତାପରେ 9 ରୁ 2 ଗଲେ 7 ତାପରେ 4 ସୋ 0.474 ଏହା ବଦଳରେ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ବି ପୁଟ୍ କରିପାରିବ 0.474 476 476 ବା 0.476 ବି ପୁଟ୍ କରିପାରିବ 0.476 and let's close this bracket এটা କଣ ହେଇଯିବ 0.021 0.02136 ଆସିଗଲା ଏଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ ଦେଇଦବ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ବାଇ କରିବ 2.303 divided by 10 ହେଲା ଆମେ ସବୁ କିଛି ଏଠି ମୁଁ କରେଇ ଦଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର divided by 100 sorry divided by 100 ତ ଆମର ଆନ୍ସର ଆସିଗଲା ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଗଲା this is coming as 1 2 3 4 4.9 into 10 to the power minus 4 second inverse k1 ଆସିଗଲା ଏତିକି ଫାଇନ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏଇ ଚାପ୍ଟର ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଯେବେ ସରିବ ସେବେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର କୁ ସାରିବି 4.9 into 10 to the power minus 4 seconds inverse ହଁ କ୍ଲିୟର ବୁଝା ପଡିଲା ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଲା yes ଠିକ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ଆମର ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଦଉଛି ତମେ ନିଜେ ଘରେ କରିକି ଆଣିବ ହେଲା let me give a homework from your entrance part ପ୍ରେସର ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଗିଭେନ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଟା ଗିଭେନ ରହିଛି
दिटा गिवन रही तो दिटा टिके डिफिकल्ट एटा सब गुड़ा एनसीईआरटी बुक रे रही एक्चुअली क्वेश्चन सब एनसीईआरटी बुक रु मु नहीं आछे तो क्वेश्चन रही एटा होमवर्क तुम पई मु कहूनी एटा क्वेश्चन रही कोन ना the decomposition of SO2 of SO2 SO2 at constant volume follows the order. At constant volume follows the order. Follows the order. ମୁଁ ଏଠି ସବୁଟା କନସେପ୍ଟ କୁ ଯେହେତୁ କଭର କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ଯଦି କେବଳ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାର୍ଟ କୁ ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ହେଇଯାନ୍ତା ଏଇ ଚାପ୍ଟର କେତେବେଳଠୁ ସରିଯାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଜିନିଷକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହେଲା କେତେ ହବ ଦିସ୍ ଇଜ SO2 follows the order SO2 gives rise to SO2 gas plus Cl2 and ଏଟା କୁହାହେଲା ଏଟା follows the first order age यार ये कौन करछि ना फास्ट ऑर्डर एक्चुअली फॉलो करछि ऑर्डर होछि यार फास्ट ऑर्डर आउ एडा होछि तारो रिएक्शन आउ एठे डाटा रहिछि द एक्सपेरिमेंटल डाटा इज गिवन एज कौन अछि ना प्रथम देखिबा एक्सपेरिमेंट तापर अछि हमरो टाइम तापर टोटल प्रेशर टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकंड टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एटीएम है सो ये हबो 1 2 दुईटा अछि एटा 0 0.5 एटा अछि 100 0.6 सेम फॉर्मेट रे अछि एटा पीआई पीएफ गिवन अछि हैला एटा भी एंट्रेंस लेवल रो ये प्रियंका एटा केवल एंट्रेंस में तमर ये पार्ट पई जमा आसीबन हमर तमर बोर्ड रे या भलिया क्वेश्चन आसीबन कारण बोर्ड रे भलिया सिलेबस ही नहीं तो तुमे याको निजे सॉल्व करिवो चेष्टा करिवो नहले मु नेक्स्ट क्लास करबी हैला सो एटा को निजे सॉल्व करिवो नहले मु करबी तापर आउटे डाटा रहिछि जोठी की तुमरो कुहा ହେଇछि for the decomposition of hydrogen nitrogen at following data are obtained एठी तुमको এই क्वेश्चन रे टॉपिक कोन এই क्वेश्चन रे टॉपिक से फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एक्चुअली फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अंडर रे ही एटा आछि सो এই क्वेश्चन रो बेटर हबो मु एठा ओडे टॉपिक रे ए जगह रे मु ऐड करछि एटा फास्ट ऑर्डर अंडर रे ही आछि ताको मु लिखि दिए एटा एंट्रेंस पार्ट रे ताको लिखि दिए फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स in terms of pressure fast order kinetics in terms of pressure fast order kinetics in terms of pressure देखु ना मु केते क्वेश्चन केते वैरायटी रो क्वेश्चन करोछि एक्चुअली एटा तुम सिलेबस रे नाही पिला माने एई पार्ट एक्चुअली नाही सेतमे मु आको केवल कहूछि एटा केवल एंट्रेंस रे अछि हला ओनली फॉर एंट्रेंस पार्ट एटा बी ओनली फॉर एंट्रेंस पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट आउट क्वेश्चन जोटा कि अगेन एंट्रेंस एटा भी अगेन एंट्रेंस क्वेश्चन हैला एटा अगेन एंट्रेंस क्वेश्चन सो एटा भी एंट्रेंस या पूर्वटा भी एंट्रेंस लिखि दे एटा एंट्रेंस दिस इज अगेन एंट्रेंस फॉर एंट्रेंस एक्चुअली entrance only this is again for entrance only
एंट्रांस माने एंट्री कला बेले राइट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाए क्वेश्चन रही द डिकम्पोजिशन ऑफ एजिओप्रोपेन द डिकम्पोजिशन ऑफ एजिओप्रोपेन এই क्वेश्चन गुड़ाक एग्जैक्टली एक्चुअली नीट रे आसे एजिओप्रोपेन the decomposition of agiopropane to hexane and nitrogen to hexane and nitrogen hexane and nitrogen at 543 Kelvin follows the data data अनुसार कौन रही ना experiment time second pressure in mmHg टाइम जिते तुम 0 थी 35.0 एटे तुमको रिएक्शन भी कहनी तुमको एजिओप्रोपेन भी किसी कहनी सो एजिओप्रोपेन रो फार्मूला बाहर करिवो हेक्सेन और नाइट्रोजन रे केमिति कन्वर्ट होची तार फार्मूला देखिवो रिएक्शन देखिवो करिके याकू सॉल्व करिवो मन रखना ई क्वेश्चन गुटा को प्राय एंट्रेंस रे आसे हला एंडा सब गुटा को सीबीएसई क्वेश्चन माने सीबीएसई रो हमरो एनसीईआरटी बुक रो ही नहीं छी मो क्वेश्चन कहबो जदी क्वेश्चन नंबर भी कह दोची एटा होची 20 नंबर क्वेश्चन এই চ্যাপ্টার এক্সরসাইজ রে ଅଛି 20 नंबर क्वेश्चन ହେଲା ଏତିକି ଡାଟା ରହିଛି calculate the rate constant ତମକୁ ଏଠି କହିନି ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର କି ଜିରୋ ଅର୍ଡର କି ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର calculate the rate constant କହିନି କି ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର କି ଜିରୋ ଅର୍ଡର କି ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କିଛି ବି ଡାଟା ଦେଇନି ତ ତମକୁ ଏଠି ଆଗ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଟା କି ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର ଅଫ ଦ ରିଆକ୍ସନ ଚେକ୍ କରିବ ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇ ପ୍ରେସର କୁ ଧରିକି ହେଲା तापर फर्दर तुम रेट कांस्टेंट बाहर करिवो सो एटा टिके टफ अछि आगो क्वेश्चन को एटा टिके टफ अछि ए क्वेश्चन भी मु नेक्स्ट टाइम करबी बट एटा होमवर्क दोछि आगो आगो तुम निजे ट्राई करो कारण प्रीवियस क्वेश्चन को रिलेट करके ही क्वेश्चन गुडा का हिच मॉड्यूल तापर हम देखिबा एटा भी फॉर एंट्रांस ओनली एटा हमरो फर्स्ट ऑर्डर सरला फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन जोड़ा आमे नेक्स्ट क्लास रे एक्चुअली पढिबा आजर क्लास रे पढी परिबनी मते टिके काम अछि एमिजरे मोर आज भी प्रेजेंटेशन अछि तो मते आज भी टिके फोकस करिया को पड़ियो सो काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन हला जोड़ा कि आमे नेक्स्ट क्लास रे पढिबा आसंदा काली पढियो मु आज टिके अधिक समय पढी भाबिथिली बट स्टिल आई एम अनएबल टू टीच यू सॉरी किछि काम भी अछि मते पुणी फोकस करियो पड़ियो पीएचडी काम को नेकी दे ओके ठीक अछि ओके थैंक यू ऑल ऑफ चलो थैंक यू हैव ए गुड डे